I think one of the thing is how can we help Pakistan? What's the environment like? So based on your interaction, obviously I read it in the beginning how you were engaged in terms sort of bringing an investment in Pakistan. People here, how can they help? Number one. But before they even think about getting help, how would you? What's the message? कि भैया इतना scary काम नहीं है, आप ये करें. And then when you look, so I'll come to it, but let's stop there. What would be your ask or message? So Qasim, I'll give you. So before coming on this trip, I was watching the news and I was looking at what was happening in LA, and I was saying, यार अमेरिका तो बड़ी खतरनाक जगह है. ठीक है. And then every other day there's a story कि जो immigration पे green card वाले को वापस भेज दिया, तो students को deport कर दिया. So remember, every country in the world has its own set of challenges. Pakistan has its own set of challenges. हो सकता है कि हम लोग जो है, so what happens is, अगर आप bias निकाल देना, आपका कोई भी आपकी, you could have a bias, political bias, you could have a other issues, you could have had a bad experience yourself which has created a bias in you. वो सारी चीज़ें अपनी जगह छोड़ दें. I want to ask you, मैंने कहा भी वो पाकिस्तान को 30 CEOs आ रहे हैं आपके पास. Have you ever paused and thought that Pakistan में there are global giants in Pakistan that operate? There is Pepsi Cola, Coca-Cola, Procter and Gamble, Unilever. These are global multinationals. And have you ever paused and said, because they're very transparent organizations, you can actually find their data, their financial data online, right? Yep. Most of these companies you can find. And that they show growth every year. And they've shown growth for decades. मतलब 20-30 साल बल्कि 40 साल से काम कर रहे हैं पाकिस्तान. And they've been growing constantly. What does that tell you? That tells you that Pakistan has absolutely full potential. Yes, we need reform. इसमें कोई शक की बात नहीं. Yes, we have a challenge with corruption. इसमें भी कोई शक की बात नहीं. Yes, we have problems with law and order. Yes, we have a terrorism problem. But we are 240 million and growing population, which is a consumer base, which needs to eat and drink and feed itself and educate itself and ride a bike to work or a motorcycle or a car to go to their destination and so forth and so on. So this, so being concerned about Pakistan, yes, Pakistan has challenges, but so do other countries in the world. But that doesn't mean कि वहाँ पे business होना बंद हो जाए. ऐसे नहीं होता. There are so many Democrats in United States of America, businessmen. You have so many, billionaires and all that, who are not aligned with the current administration's vision. But they haven't stopped doing business in the United States of America and said, okay, I'm going. मैं तो नहीं करता, मैं बंद. It doesn't work like that. As Pakistanis or overseas Pakistanis, you have to, and then most importantly as entrepreneurs and investors, you have to look at the most important thing. What is that? The P&L, profit and loss. If I will invest, what will I get? And of course you put in the risk matrix in it and say, what is my risk exposure? How can I mitigate this risk? All of those things are there. And then the government of Pakistan. The government of Pakistan is trying. We've gone through a very difficult political period in Pakistan's history, right? But as the Council General just mentioned that there are so many great news coming out of Pakistan. छोटी है ना, अगर आप पॉजिटिव, हम नेगेटिव देखने पे आ जाए तो भाई फिर तो इतना नेगेटिव है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मीडिया है वो तो नेगेटिव को ऐसे दिखाता है कि जैसे कि मतलब वो है, which is fine, because वो रेटिंग का चक्कर है, उनकी अपनी ऑब्लिगेशंस है, उनके अपने चैलेंजेस हैं ना, उनको भी एक बिजनेस रन करना है. दैट बिजनेस रन्स व्हेन देयर सनसनी खबर आपको बता देंगे, बहुत सारों के यूट्यूब के चैनल्स भी वो सनसनी खबर और बस यूं और वो. दैट्स नॉट हाउ कंट्रीज ऑपरेट. A country has to work on a greater purpose, on a greater level, the growth. Now, बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं, भाई इस बिजनेस का क्या फायदा, गरीबों का क्या फायदा? अरे भाई, कोई भी एक कारोबार होता है, उस कारोबार के साथ कुछ नौकरियां जुड़ी होती हैं, ठीक है, तो वो घर चल रहे होते हैं. प्लस हर कारोबार के पीछे फिर एक और पूरा इकोसिस्टम होता है जो दूसरे कारोबार चला रहा होता है.
ऐसे ही होता है ना दुनिया को, ये दुनिया के एक मैंने फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल लिया है तो बस वही एक कारोबार है तो मेरा ही फायदा हो जा रहा है. नो, देयर आर, सो व्हाट, हमारे मुल्क में एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वेल्थ क्रिएशन को विलिफाई कर दिया गया. यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सोसाइटी को इस तरह रिग कर दिया गया है, इस तरह लोगों के दिमाग में ये बातें बिठा दी गई है कि वेल्थ क्रिएशन को विलिफाई कर दिया गया. तो इतने पैसे आ गए, और फिर ऊपर से क्या है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक फितरतन क्या काम होता है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बेस्ट काम है अगले पे कीचड़ उछालते रहो. ये एक अनफॉर्चुनेट है. दिस इज हाउ वी हैव बिकम. वी शुड नॉट बी नेगेटिव लाइक दिस. वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर. आई टेल यू, आई लिव इन दुबई. दुबई इज अ प्लेस वेयर, सो 23 साल से दुबई मेरा घर है, ठीक है. दुबई में 193 नेशनैलिटीज इकट्ठा कोएग्जिस्ट करती हैं परफेक्ट हार्मनी के अंदर. लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ. मैंने एक चीज नोट की है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के जो दोस्त हैं वो दुबई में एक दूसरे को एलिवेट कर रहे होते हैं, वो पुश कर रहे होते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं कि यार ये इसको ये कैसे आगे निकल गया. सो we have to start thinking differently. We have to stop vilifying wealth. Wealth is a good thing because wealth actually shows that there is progress. Progress का by product prosperity है. Prosperity को हमें vilify नहीं करना चाहिए. हमें चाहिए कि हम encourage करें लोगों को. I'll give you a very simple example. अभी हम एक होटल बना रहे हैं नथियागली में. इसको, you know, it's a Doubletree Hilton. It's the first Doubletree Hilton that is being opened in Pakistan. So we are actually 27th को we have a soft opening of this month, and then we'll be fully in business. Now जब ये होटल बन रहा था तो पहले तो बहुत सारे, so मेरे एक और पार्टनर है उसके अंदर who's also an overseas Pakistani. And हम लोग जब ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि अभी पागल हो गए क्या, इतने पैसे लगाओगे, ये करोगे, you know, it's a almost a $67 million project, right? तो क्यों, और ये और वो. What people don't understand that there are numbers that back this decision. Domestic tourism has increased so much in Pakistan in the last few years that it is unbelievable. It is really unbelievable कि domestic tourism इतनी increase हुई. उसकी एक वजह क्या थी, रुपी वीक हुआ तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते थे उन्होंने कहा नहीं यार अब तो महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, तो फैमिली के साथ अब यहीं पे चलो. So they started exploring Pakistan. And when you started exploring Pakistan, you know, you had a big boom that has happened in the northern areas. Right? And the northern areas are not prepared to handle this kind of boom. So उसका आपको मैं रिजल्ट बताता हूँ क्या हुआ. एक आपको याद है मरी में एक हादसा हो गया था, बर्फ पड़ी हुई थी और इतने टूरिस्ट थे, ट्रैफिक जैम हो गई, उन्होंने उनको कमरे नहीं दिए. So many people died that day, right? So we are not. Then there have been traffic jams which have lasted 16 hours in the mountains because so many tourists have arrived and वो गाड़ियाँ फंस गई हैं और अब वो 14-15 घंटे तक वो इंतजामिया लगी हुई है उसको नहीं. But that all indicates to you one thing, that there is tourism potential. So that's why we invested. So the story of Pakistan has to be told by Pakistanis in a positive manner. If we Pakistanis will consistently keep on giving a negative story of Pakistan, अगर हम भी खुद ही शामिल हो जाएंगे अपने ऊपर खुद कुछ हमले करने में, तो फिर पाकिस्तान की स्टोरी जो है ना वो सही नहीं होगी. हाँ, हम बेशक पाकिस्तान से, आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, मुझे पता है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन पासपोर्ट भी है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों की रूह हंसी वहीं पे हुई है. सो यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान बट यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान आउट ऑफ अ पाकिस्तानी. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो यू हैव टू नरेट द स्टोरी. नाउ यू कैन टेल योर फ्रेंड हु वुड क्वेश्चन you, oh but you know you create so many terrorists. Oh, wait a minute, who told you that? Confront it, negate it, propagate against it. Don't shy away from it. But Osama bin Laden was there. ओ भाई 20 साल तो आप लोगों ने लगा दिया उसको ढूंढते ढूंढते, तोरा बोरा के पहाड़ों की ऐसी की तैसी फेर दिया आप लोगों ने कि जी इधर है, हमने मार दिया. कभी उसको कहा कि जी मर गया है, किसी गार में पड़ा हुआ है, ये है वो है. वो आपको नहीं मिला, आपके पास तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है. सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. अभी एक जो भी हमारे पड़ोस ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, अभी कुछ हुआ नहीं, 5 मिनट के अंदर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कांट अलाउ द अदर साइड स्टोरी to go unchecked. You have to make the narrative yourself. And as entrepreneurs, let me tell you, Pakistan is an exceptionally great business destination. As vice chairman of DP World, I want to tell you this as well.
This is a very interesting. So I was interested by the government of Dubai, and I was appointed as vice chairman for DP World in Pakistan. And I was told, okay, find us avenues of investment in Pakistan. So I want to tell you something very interesting. We have already deployed a major investment, हमने कागजी कार्रवाई नहीं की हुई. We've deployed a massive investment into Pakistan, DP World. And I am now working on an $850 million investment plan for Pakistan. That includes a $430 million corridor of Karachi-Pipri corridor, which is to move cargo inside of Karachi to decongest the city, to bring the environmental and carbon footprint down and to work. And the second one is कि हमारी जो train ML2 है उसके ऊपर, which is another $600 million. So about $1 billion will go out of only DP World, Dubai Ports World, into Pakistan. And why? They're not doing me a favor, because Pakistan promises you returns on these investments. They see the potential that Pakistan has for these investments. That's why we are going into Pakistan in such a massive way. This is what we are focusing on. So we have signed, we have just introduced 1,200 trucks, new trucks in Pakistan. Each truck comes with 4 drivers, meaning we've created 4,800 jobs already, which affects 4,800 households, right? We built 3 state-of-the-art, already built. मैं आपको कह रहा हूँ हमने already deploy कर दी investment. We've built 3 state-of-the-art logistics parks, Karachi, Lahore, Rawalpindi, already built. One of them is coming online this August, right? Which will improve our supply chains massively, right? Creating thousands of new jobs. We have a state-of-the-art terminal at Port Qasim in Karachi, QICT, DP World ka terminal, which is the best performing terminal of Pakistan at this particular time and stage for both import, export and transit trade, right? And we continue to look at other opportunities. I am now working, I've started doing research because I personally believe, and I've told my team in DP World, that we have to take into account the potential of cold chain, for instance. अब आपको पता है cold chain क्या होती है? Cold chain, for those you don't understand, I quickly tell you. So supply chain होती है आपकी कि जी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, लोड हुआ गाड़ी में, गाड़ी पहुंची एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से जहाज़ों में लोड हुआ, प्रोडक्ट चला गया अपनी डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे भी जाना है एक्सपोर्ट के लिए, सो फोर्थ, जो भी पूरी है. अच्छा वो जो रॉ मटेरियल आना है उस टेक्सटाइल को बनाने के लिए, वो कहाँ से आ रहा है, टाइम नहीं पहुँच रहा है, होल सप्लाई चेन. उस तरह कोल्ड चेन होती है जो आपको बेसिकली रिक्वायर्ड होती है फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स, फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल. तो पाकिस्तान हर साल एक एस्टिमेट है कि $200 मिलियन की चेरी हमारी, चेरीज, यू नो वी हैव सम ब्यूटीफुल चेरीज इन पाकिस्तान, वो हमारी $200 मिलियन की चेरीज वेस्ट हो जाती हैं. वो डोमेस्टिक मार्केट में क्यों होता है? जब फल तोड़ा जाता है ना दरख्त से कासन, तो वो उसकी लाइफ, उसी वक्त उसका लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है. अगर उसको क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वेयर हाउस में ना रखा जाए, उसको फ्रोजन अपना रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स के अंदर मूव ना किया जाए, तो शॉर्टन हो जाती है लाइफ. अब क्या होता क्या है, जो लोकल फार्मर है उसके लिए तो वो है ना, उसने पिक कर ली है चेरी, तो वो जितनी जल्दी माल काटेगा उसको इतना अच्छा रेट मिलेगा उसका, और वो जितनी पुरानी होती जाती है कोई भी फल, वो उसका रेट गिरता जाता है. एंड में अगर आप लोग कभी पाकिस्तान की फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट में जाएं तो आप कभी नोट कीजिएगा, बहुत सारा गला हुआ फ्रूट और वेजिटेबल पड़ा होता है कूड़े के ढेर के अंदर, बिकॉज वो जो भी बेचारा ट्रेडर लेकर आया होता है, अगर वो नहीं बेचा होता तो he throws it, he disposes it all. So we lose out on potentially $200 million worth of exports every year because we don't have the cold chain facilities available for cherries. That's just one particular fruit that I'm telling you about, right? मैंगोज कितने हमारे अभी आमों की बात होती है, आमों की भी कोल्ड चेन है बहुत लिमिटेड, हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है स्टोरेज की, क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज, रीफर्स की, वो बहुत लिमिटेड है. सो वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स दैट वे. So we want to basically invest, as DP World wants to invest in ensuring that we can actually enhance Pakistan's exports. We make money off of it, of course. You know, if somebody is doing a particular business and they're moving their cargo with us, we make money. But in order for us to generate cargo, we want to make sure that any country that we are operating in, that country has the right environment, that their businesses should flourish so that cargo is generated. So DP World currently is
across 90 countries around the world. We have 185,000 plus employees around the world, right? We operate some of the biggest ports around the world. That includes the Jebel Ali port and Port Rashid in Dubai, Port Qasim in Karachi, but also ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े पोर्ट्स में से 4 पोर्ट्स में वो हमारी मैनेजमेंट में है। हांगकांग में हमारा पूरा एक टर्मिनल है, चाइना में 2 पोर्ट्स के ऊपर हमारे टर्मिनल्स मौजूद हैं, कनाडा के 5 बोथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में से 3 टर्मिनल्स आर अंडर डीपी वर्ल्ड्स कंट्रोल. The entire African continent we have surrounded. We are London Gateway, one of the biggest European ports, is with us. It's a DP World concession. So we go into a country, we look at the potential of the country, and then we try to enhance the economic activity. जितनी economic activity होगी, उतना ज़्यादा cargo generate होगी, inwards and outwards, and that's our. So I'm just saying to you, is Pakistan is a great destination to invest in. It's a great, whether it's tourism. अभी ये बता रहे थे कि जी aviation को helicopter में भी, I bought a helicopter. And it's arrived in Pakistan. It's an Augusta Western 109. And so you must be thinking, why a helicopter in Pakistan? I want to tell you, such a strange thing. I tell you, in the luxury sector or in that sector, we have so many foreign executives that are coming in for different things, for mining operations के लिए, record के लिए, so forth, and for other options and oil and gas and this and that the other. They can't find, when they come in, they land in Islamabad, वो अपने private jets में आते हैं. And then they need to go to a field visit or they want to go to a smaller destination and all that. They end up hiring helicopters which are really old aged helicopters, Russian Mi-17s वगैरह वो है. They don't feel safe और बहुत सारे कंपनियों के executives को insurance cover नहीं करती कि इस तरह के इतने पुराने जहाज में आप नहीं सफर कर सकते. So we looked at a gap in the market and we decided, you know what, we're going to start that. And not only that, we made it a point कि जो hotel properties हमारा एक अताबाद में हमारा hotel है, which is already operational. This one will be operational, as I said, in August in Nathia. In both the hotels, we made a helipad. So we will take our guests on a helicopter if you want to buy that service. You can come and we'll deliver you to the hotel property and then bring you back. But other than that, there are all these executives that are coming to Pakistan consistently that need that service. And so we've done our feasibility backed by numbers again, by all the potential, and it makes money. It's an expensive proposition. It's a $2.5 million helicopter that we bought. And it has running expenses almost $4,800 an hour, but it is workable. It actually works, right? So that's why we've done it. The शौक में नहीं किया गया चलो helicopter भी ले लेते हैं. ऐसे नहीं है. There is there is some reason and logic. Pakistan is a great destination to invest. Pakistan has challenges like every society does, right? But that should not scare you from. And let me tell you something. Entrepreneurs in Pakistan are unbelievable. Because with all these challenges, with law and order, theft, chori, with corruption from government offices, वो आके उनको bully करते हैं, with political parties asking for bhatta, with all of those challenges, they fight those challenges and at the same time do business and do outstanding business. I want to tell you a quick story about a lady who's a widow in Karachi, who started a cake baking service from her residence about 7-8 years ago to support the kids because the father unfortunately untimely death. Started selling those cakes on WhatsApp groups, okay? Today generates sales worth 700,000 to 800,000 rupees, 7 से 8 lakh रुपए daily. Yeah. Daily. Her cheesecake is one of the most wanted. Cheesecake is very mature in but it's the most sought after और चूंकि वो limited capacity है उनके ovens की तो वो जितने बनते हैं बस वही है. वो कहती है भाई इतने बनते हैं और इतने जब बिक जाते हैं तो बस ठीक है खत्म मतलब ये I can't increase this So आप सोच रहे होंगे कैसे आपको मैथ बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे. So the cake is about 12,000 to 15,000 rupees. I'm trying to figure out what, right? So it's 15,000. Kitchen cuisine? नहीं किचन कुजीन तो बहुत पुरानी है और पाई इन द स्काई दिस अ वेरी ओल्ड बुक. इट्स वो आंटी का नाम है बकायदा बट वो आई वाज शॉक्ड टू नो कि वो उनका जो बैंकर है वो मेरा जानने वाला है जो उनका वो अकाउंट भी उनका वो तो उसने मुझे कहा कि भाई वो डेली कैश आता है. आज लाइक ओके दैट्स अमेजिंग मैन that's and that's by the way mind you this is a Karachi based business because she does not have the supply chain, the cold chain available if the cakes are kept in freezing environment and taken to other cities. So she doesn't have that distribution available to her. But I'm just giving you a small example
of things that happen in Pakistan, and that entrepreneurs, outstanding entrepreneurs, and this is just one example. If I take you, there is one farmer or farm house owner in Karachi. He has just cultivated the first ever small batch crop of a Japanese mango, which retails for almost $1,200 or $2,000 a kilo. Oh wow. Right? It's a particular specialized Japanese mango. वो पर्पल कलर का आता है. वो उसने कराची में उधर अपना मलीर में अपने फार्म हाउस में उन्होंने अपना जो है वो बना लिया, उगा लिया और said it can be done here. And you know that just now, about a month ago, olive oil extracted in Balochistan, Pakistan, won the olive oil some competition here in New York. Right. Against Lebanon ka aaya hua olive oil and these other brands that were there. This one particular, so look, the stories are outstanding. These are the stories you need to be focusing on. ठीक है ना? These are, if you keep on looking at the stories, वो जो हमें सनसनी फैलाने के लिए एक वो रहता है या एक वो bias से loaded जो stories है, भाई वो है, आपकी हकीकत है. मैं उसको तो डिफेंड नहीं कर सकता यहाँ पे बैठ के, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट और अपील कर सकता हूँ, don't let that be the story of Pakistan. That cannot be the story of Pakistan. It is a story that you and I will tell of Pakistan that needs to matter. That's the story we need to tell. Yeah. Beautiful.